Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are doing well. Welcome to the Slate class of Physics O levels. As you all know, that we are continuing with the chapter of light, and we have discussed the lens thoroughly. Right? What are the two types of lens? Converging lens, which is also called as convex lens, and diverging lens, which is called as concave lens. Right? In this video, we are going to discuss image formation in human eye. बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इसको आप बायो में पढ़ते हैं तो आप बायोलॉजी की स्लेट वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो यू कैन सी कि हमारी आई के अंदर एक नेचुरली लेंस प्रेजेंट होता है विच इज थिक फ्रॉम द सेंटर। व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस लेंस? दिस लेंस इज कॉल्ड convex lens or converging lens, right? So basically this lens helps us to view, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें कितनी ज्यादा एबिलिटी दी है कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को व्यू कर सकते हैं। अगर हमारे पास सेंस ऑफ साइट ना हो, व्यू ना हो, तो फिर हमारी लाइफ देखिए कितनी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। सो देखिए जरा, देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ एन आई विच इज रेफर्ड एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से 4 रेज यूज करते हुए इमेज फॉर्म हुआ है एट द बैक साइड ऑफ आई एंड दिस पॉइंट इज रेफर्ड एज रेटिना। इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना। देखिए जरा, 2 रेज, रे नंबर 1 एंड रे 2, और उसके बाद 2 रेज रे 3 एंड 4। सो बेसिकली ही हैज यूज्ड 4 डिफरेंट रेज टू फॉर्म एन इमेज एट रेटिना, ठीक है। जिस पर्सन का नॉर्मल विजन होता है विदाउट ग्लासेस, वो शार्प ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकता है, उसके रेटिना के ऊपर क्लियर इमेज फॉर्म होता है। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट दिस इमेज विल बी रियल, ठीक है, बिकॉज सारी की सारी रेज रेटिना पर कन्वर्ज हो रही हैं, एक रियल इमेज फॉर्म होगा। इट वुड बी इन्वर्टेड, ठीक है, and it is smaller in size from the object, so it is diminished, ठीक है। एक और बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जब भी आप रे ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर एरो जरूर लगाएंगे, राइट। सो बेसिकली दिस इज अ डायग्राम ऑफ साइड व्यू ऑफ एन आई, ठीक है। द पॉइंट इनसाइड द आई where the image is formed, that point is referred as retina. So previous case में हमने ये देखा कि image formation के लिए he has used 4 rays, ठीक है। But for our concern, only 2 rays are enough to draw image, right? So here I will draw 2 rays for the image formation. So these are the 2 rays of light which are coming from certain object and are incident on the lens of human eye, ठीक है। These are the 2 rays which are coming from object, ठीक है। जिस पर्सन का नॉर्मल विजन होता है, जिसकी आई साइट वीक नहीं होती, उस केस में इमेज इज फॉर्म्ड राइट एट द रेटिना। सो दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। These rays will converge and they will meet with each other right at the retina of eyes, ठीक है। हर रे के ऊपर एरो ड्रॉ करेंगे। दिस इज द लेंस इनसाइड द आई एंड दिस इज कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। सो वी कैन से दैट sharp image is formed where? At retina, ठीक है। A person with a normal vision has a clear image, has a sharp image which is formed right at the retina of an eye, ठीक है। So this is called normal vision. This would be real, inverted and diminished, ठीक है। हमारे ब्रेन के एल्गोरिदम्स इस इन्वर्टेड इमेज को अपराइट करके हमें परसेप्शन होती है कि ये एक अपराइट इमेज है, ठीक है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो इनसाइड द आई ट्री बना हुआ है, बेसिकली द इमेज ऑफ ट्री इज इन्वर्टेड, ठीक है। तो जो हमारे ब्रेन के प्रोसेसेस है वो उस इन्वर्टेड इमेज को फर्दर इन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमें
अपराइट की परसेप्शन मिले. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल विजन. बट इफ देर इज डिफेक्ट इन आई, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट सही तरह फोकस नहीं कर पा रहे, आपको ऑब्जेक्ट अनक्लियर नजर आ रहा है, ब्लर नजर आ रहा है, then you need to correct that using glasses, right? So we will discuss defect in eye, but before that we will have a look at this image. ठीक है. अगर आप इस पिक्चर की लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो आपको एक ब्लर इमेज नजर आएगा. ठीक है. दिस इज नॉट अ क्लियर इमेज बिकॉज इट्स बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड और आपकी इसमें माइनर डिटेल जो है वो क्लियर नहीं है. ठीक है. लेकिन जो राइट साइड पर जो इमेज नजर आ रहा है दैट इज कंपैरेटिवली मोर क्लियर बिकॉज इट इज अ शार्प इमेज, इट्स बाउंड्रीज आर वेल डिफाइंड. ठीक है. सो इफ अ पर्सन हैज सच अ व्यू दैट ऑब्जेक्ट्स आर ब्लर, ही नीड अ करेक्शन. ठीक है. तो उसको ग्लासेस लगानी पड़ेंगी या उसको लेंस लगाने पड़ेंगे जिसकी वजह से उसका शार्प इमेज फॉर्म होगा. And then he will be able to see a clear object, right? So the two types of defect of an eye are called short-sightedness and long-sightedness, right? So what is short-sightedness? आप लोग लिखेंगे in short-sightedness, या unclear. जब आप कहते हैं कि एक पर्सन को दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियर नजर नहीं आ रहे, दैट पर्सन इज शॉर्ट साइटेड पर्सन, राइट? सो व्हाई दिस इज कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस? तो आप लोग लिखेंगे इन शॉर्ट साइटेडनेस, image is formed in front of retina. ठीक है. रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्म हो जाता है, रेटिना से शॉर्टर डिस्टेंस पर ही इमेज फॉर्म हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, these are the two rays of light which are coming from a distant object. ray 1, ray 2. हर रे के ऊपर एरो प्लेस किया जाएगा. ठीक है. सो दीज आर द इंसिडेंट रेज. दिस पॉइंट इज रेफर्ड एज रेटिना. नाउ हैव अ लुक वेयर इमेज इज फॉर्म्ड. जब ये रेज कन्वर्ज हो रही हैं तो ये रेज जरूरत से ज्यादा कन्वर्ज हो रही हैं. सो इमेज इज फॉर्म्ड वेल बिफोर रेटिना. ठीक है. इन रेज को कन्वर्ज होना चाहिए था एट द रेटिना, बट दे आर कन्वर्जिंग एट दिस रेड पॉइंट विच इज वेल बिफोर रेटिना. ठीक है. सो व्हाट इज द डिफेक्ट इन आई? इस वक्त आपके आई के अंदर डिफेक्ट ये है कि जो लेंस है इट इज मोर कन्वर्जिंग. दिस लेंस इज मोर कन्वर्जिंग. सो यू नीड टू मेक द लाइट a bit diverging ताकि आपकी सारी की सारी लाइट जो है वो फोकस हो राइट एट द रेटिना. ठीक है. तो शॉर्ट साइटेडनेस को फिर किस तरह से ट्रीट किया जाए, किस तरह से क्योर किया जाए? यू विल हैव टू वेयर ग्लासेस और लेंस, एंड इन दैट केस यू विल हैव टू वेयर डाइवर्जिंग लेंस. ठीक है. नाउ हैव अ लुक हाउ डज इट वर्क. These are the rays of light once again coming from the distant object. ठीक है. अब इशू क्या था? इशू ये था कि आपके आई का लेंस जो था वो मोर कन्वर्जिंग था. सो डाइवर्जिंग लेंस लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा, थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर देगा, सो दैट व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड राइट एट द रेटिना. ठीक है. फॉल्ट ये था कि आपके आई का लेंस वॉज मोर कन्वर्जिंग को लेस कन्वर्जिंग करने के लिए आप लाइट को थोड़ा सा पहले ही डाइवर्ज करवा देंगे. देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड राइट एट द रेटिना ऑफ आई. ठीक है. नाउ दीज रेज विल कन्वर्ज in such a way
that now they will perfectly meet at the retina. ठीक है, now these rays of light are converging right at the retina. So now, which lens is used to cure short sightedness? Diverging lens. ठीक है, and now we can say that sharp image is formed. Sharp image is formed at the retina. ठीक है, रेटिना के ऊपर अब शार्प इमेज फॉर्म होगा. ठीक है, हम इसको जरा जल्दी से रिवाइज करते हैं. शॉर्ट साइटेडनेस में करीब के ऑब्जेक्ट्स क्लियर नजर आ रहे थे. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स वर अनक्लियर बिकॉज इमेज वॉज फॉर्म्ड, द रेज वर कन्वर्ज वेल बिफोर द रेटिना एट दिस पॉइंट. ठीक है, द लेंस वॉज more converging, so to make it less converging so that the image is formed right at the retina, आपने rays of light को थोड़ा सा diverge कर दिया. ठीक है, using diverged lens, और उसके बाद आपके लेंस ने, आई के लेंस ने उसको normally converge कर दिया at the retina. So this is how you cure short sightedness. The other defect of eye is called long sightedness. ठीक है, so what happens in long sightedness? तो आप लोग लिखेंगे in long sightedness, distant objects are clear. Distant objects are viewed clearly, but closer objects appear blurred or unclear. ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस में दूर के ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल क्लियर नजर आते हैं, राइट. लेकिन जो करीब के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जब आप बुक रीड करते हैं तो बुक आपको ब्लर्ड नजर आती है. आपका तो वैसे भी बुक पढ़ने का दिल नहीं करता. ठीक है, ओके. So here we have an object which is very close to an eye. ठीक है, ओके. What will happen is जब इस ऑब्जेक्ट से रे इंसिडेंट होंगी ऑन द सरफेस ऑफ लेंस, दिस इज रे 1 coming from the top part of this object. This is ray 2 which is coming from the bottom part of the object. Right? And this point is called as retina. ये रेड कलर का जो मैंने पॉइंट लगाया है, this red point is called as retina. ठीक है, and now the lens inside your eyes is called as converging lens. This lens will converge these rays in such a way that image will be formed, but the image will be formed behind the retina. ठीक है, these rays are converging. These rays are also converging. Right? लेकिन कन्वर्ज तो हो रही हैं, लेकिन सारी की सारी रेज ऑफ लाइट रेटिना पे कन्वर्ज नहीं हुई, बल्कि बिहाइंड द रेटिना कन्वर्ज हुई. ठीक है, सो वी कैन से दैट शार्प इमेज is not formed at retina. Sharp image is not formed. So what is the defect in your eye? In this case, the defect is your lens is less converging. Your lens is less converging. इसका मतलब ये है, to make it more converging, you will टेक द असिस्टेंस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस. देखिए ना, आई का लेंस इस वक्त लेस कन्वर्जिंग है, तो ज्यादा कन्वर्ज करने में आपको हेल्प चाहिए एक कन्वर्जिंग लेंस की. ठीक है, तो इसकी करेक्शन करने के लिए भी आपको एक कन्वर्जिंग लेंस की जरूरत है. ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस इट्स करेक्शन. ठीक है, इट्स करेक्शन इज डन बाय दिस एक्सटर्नल लेंस एंड दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस.
ठीक है. Once again I am drawing an object in front of the eye. Closer object है, इस वजह से draw किया, right? So these are the rays of light coming from the object. Once again, this is first ray, right? This is second ray. So firstly, they are incident on the lens which is outside the eye. It could be in the form of contact lens, it could be in the form of glasses. ठीक है. So partially converge हो जाएगी light using this external lens. तो देखें, ये light थोड़ी सी converge हो जाएगी, थोड़ी सी inward bend हो जाएगी using this lens. So here you have partially converged light. ठीक है. So basically this external lens has helped you to converge the light partially, और अब बाकी का काम जो है वो आई का लेंस आराम से कर लेगा. ठीक है. वो लेंस इसको इस रेटिना के ऊपर इजीली कन्वर्ज कर देगा. So have a look. Now the rays are being converged right at the retina of eye. ठीक है. हर रे के ऊपर एरो ड्रॉ करेंगे. And now you can say that these rays of light are perfectly converging right at the retina of eye. ठीक है. So now we can say that using this converging lens, sharp image is formed. Sharp image is formed at the retina of eye. So this is how you cure long-sightedness. A quick revision, shabash. So how does the normal eye work? Normal eye के अंदर the image is formed right at the retina without the assistance of any external lens. A sharp image is formed right at the retina. ठीक है. What are the two defects? Number one, the defect of eye is called short-sightedness, in which image is formed before retina. Short-sightedness में करीब वाले objects are clear, distant objects are blurred, and image is formed before retina. ठीक है. इस केस में आपके eye का लेंस जो होता है वो more converging होता है. So it need a diverging lens to make the rays a bit more diverged, ताकि वो normally converge करेंगी at retina, and in this case sharp image is formed at retina. So short sightedness is cured by diverging lens. And the other type of defect of eye is called as long sightedness. जो long sighted person होता है उसको दूर के objects, distant objects clear नजर आते हैं और करीब के objects blur नजर आते हैं. Why? Because the rays do not converge at retina, rather they converge beyond retina at this point. ठीक है. So in this case the eye's lens is less converging. To make it more converging, you need a converging lens. Partially converge करेगा external lens, partially converge करेगा lens of eye, and image will be formed. In fact, a sharp image will be formed at retina, right? So this is how you form sharp image using converging and diverging lens, and this is how you treat short-sightedness and long-sightedness, right? For this you have to draw ray diagrams or past paper question की vigorous practice के साथ you can improve your concepts, right? So in this video we will wind up. Thank you.